everyone, welcome back to another educational video. Here I am Vaishnavi Mittal with you, and in today's video I am going to explain you Chapter 1 Nutrition in Plants, Class 7, Part 3. And if you haven't watched my Part 1 and Part 2 video, I have shared the link in the description box. Go and watch them now so you will be able to understand Part 3 very well. So without any further delay, let's get started. So in Part 1, I taught you about what are nutrients, mode of nutrition in plants, what are autotrophs, what are heterotrophs, and about photosynthesis. And in Part 2, I taught you about why the food is produced in the leaves in most of the plants, about colorful leaves, about stomata, and about some plants that follow heterotrophic mode of nutrition. So, in that types of plants, I taught in Part 2, I taught you about parasite type of plant, and in Part 3, I am going to teach you about insectivorous plants and saprophytes. So here it is. The definition of the insectivorous plants says, insectivorous plants are plants that digest insects for food. मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं फूड के लिए. इनके एग्जांपल्स होते हैं वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट. यहाँ फर्स्ट जो मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ ये होती है वीनस फ्लाईट्रैप की, और ये जो सेकंड पिक्चर दिखा रही हूँ ये होती है पिचर प्लांट की. सो अब हम देखते हैं कि वीनस फ्लाईट्रैप कैसे ट्रैप करता है इंसेक्ट अपने अंदर. So let's see. Here in this image you can see a spider that is trapped inside the plant, and when it touches the surface the plant closes itself and it gets trapped inside it, and due to the saliva it gets digested very easily. And now let's see how a pitcher plant traps insects inside it. So this is an image of a pitcher plant. The above portion that you can see here is called its lid, and the rest of the portion that you can see here, this is called its leaf, which is modified into a pitcher-like structure. And it also has a saliva in it which attracts insects, and when insects come inside it, it just closes its lid and the insect gets trapped inside it, and due to the saliva gets digested very easily. And the other name of these insectivorous plants is carnivorous plants. Now let's talk about saprophytes. So the definition of saprophytes is a plant, fungus or microorganism that lives on dead or decaying organic matter. मतलब saprophytes के एग्जाम्पल कोई प्लांट भी हो सकता है जैसे यहाँ पर मशरूम है, फंगस भी हो सकता है जैसे यहाँ पर मोल्ड है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन उसे अगर वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जी सकता है, उस पर रहता है, उस पर ग्रो करता है, तो वो सैप्रोफाइट्स कहलाता है. इसके एग्जांपल्स हो गए मशरूम और मोल्ड. और मोल्ड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं आपको एक बहुत फन एक्टिविटी बताती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मोल्ड होता क्या है. तो in this activity you just have to take one piece of bread and moist it with water and keep it aside
for 2 to 3 days untouched and keep it in a place, and remember, keep it in a place where it also gets the sunlight, means it also gets the heat and also the moisturization. And after 2 to 3 days you will see some black patches on it, like here you can see in this image, like here likewise you will see green or black patches on it. This is called mold. This is called mold, or we can also say fungus. So let's just complete our rest of the topic. So our part 3 will also be completed with the lesson as well. So in some other topics I have written 2 points so that you will be easy to understand. So the first point says, you must have seen green patches in ponds. These are known as algae. They contain chlorophyll, thus are green in color. मतलब आप ये नीचे इस पॉन्ड की मैंने आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं ना, इसे हम एल्गे कहते हैं। अगर आपका घर कहीं पॉन्ड के पास है तो आपने ये जरूर देखे ही होंगे। अगर देखे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसे हम एल्गे कहते हैं और एल्गे के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसे ग्रीन कलर का बनाता है। ओके, सो अब हम लिचेंस की बात करते हैं। सो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungi lives together। मतलब लिचेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो पार्टनर्स साथ में रहते हैं। और अगर कोई एग्जांपल पूछे तो इनके एग्जांपल में हम एल्गे और फंगी को ले सकते हैं, क्योंकि एल्गे के अंदर क्लोरोफिल होता है और लिखा है कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होना चाहिए और दूसरा फंगी होना चाहिए। अगर ये दोनों साथ में रह रहे हैं तो इसे लिचेंस कहते हैं। और अगर आप लोग अब पूछो कि ये दोनों साथ में क्यों रहते हैं, तो एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये अपना खाना खुद बना सकता है और लेकिन इसके पास रहने की जगह नहीं होती। और ये जो फंगी होता है इसके पास रहने की तो जगह होती है लेकिन ये अपना खाना नहीं बना सकता है। सो एल्गे जो होता है वो खाना बनाता है और फंगी को भी देता है, और जो फंगी होता है वो एल्गे को रहने की जगह देता है। और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसे हम सिंबियोसिस कहते हैं। सो चलिए अब हमारी ये वीडियो पार्ट 3 की और हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ प्रेजेंटेशन मेड बाय वैष्णवी मित्तल।